सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं टाइटल राइवलरी। तो आज का पहला वीडियो ऑन द राइवलरी सीरीज विल बी स्टार्टिंग बाय द मोस्ट आई से द मोस्ट एंटिसिपेटेड ones by all Barca and Madrid fans, which is the El Clasico, meaning the classic in short। स्पेनिश में ऐसे ही बोलते हैं। तो दोनों क्लब्स एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं एंड देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस। लेकिन राइवलरी शुरू कहाँ से हुई? तो साल 1714 में जब कैटलोनिया एक सेपरेट स्टेट था, तब उनको स्पेन ने कैप्चर किया एंड स्पेन ने उनको अपना पार्ट बना लिया। नाउ द थिंग इज, कैटलन्स की अपनी खुद की लैंग्वेज थी, आइडेंटिटी थी, एंड दे वर परसिक्यूटेड अपॉन इट। तो वो हमेशा से दोनों साइड्स में आई गेस ये रहा कि कैटलोनिया नेवर एक्सेप्टेड स्पेन एज देयर ओन, एंड Spain, as in Madrid in general, always accepted that Catalonia belonged to Spain. तो ये तो बेसिकली एक पॉलिटिकल राइवलरी का लेइंग फाउंडेशन था कि दोनों क्लब्स ने एक दूसरे को हेट करना शुरू किया। लेकिन ये राइवलरी एक्चुअल में फाउंडेशन तब ली जब स्पेनिश सिविल वॉर खत्म हुई। तो जैसा कि सब जानते हैं, जब 1940s में स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, 1936 समवेयर अराउंड 1940s तक वर्ल्ड वॉर भी ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी, अपने दूसरे साल में थी। तो नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन्स दो साइड्स थी, जिसमें द नेशनलिस्ट वर लेड बाय जनरल फ्रैंको। आई नो जनरल फ्रैंको, वन ऑफ हिज कमांडर्स वाज सैंटियागो बर्नाब्यू। एंड द अदर साइड व्हिच वाज द रिपब्लिकन्स, उस साइड में आपको थोड़े कैटलन्स भी मिल जाएंगे। उस साइड में मेजरली कैटलन्स थे, थोड़े कैटलन्स नहीं, मेजरली कैटलन्स थे, बार्सिलोना सपोर्टेड। एंड उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए फ्रैंको ने सपोर्ट लिया नन अदर देन द टू मोस्ट फासिस्ट डिक्टेटर्स ऑन प्लैनेट, मुसोलिनी एंड हिटलर। दे टुगेदर बॉम्ब्ड कैटलोनिया। जी हाँ, उन्होंने कैटलोनिया को बॉम्ब किया, बहुत से लोग मारे गए, एंड राइवलरी स्टार्टेड टू टर्न बेटर। Another point of rivalry turning better was the assassination of Joseph Sunyol, which is very contradictory कि लोग कहते हैं कि he crossed from the republic zone to the nationalist zone, that's why he was shot. कुछ लोग कहते हैं it was a pre-planned execution of the Barca president. Not many people from both sides know who was Joseph Sunyol, but it is pretty clear that there was an assassination done for the Barca president. तो जब वॉर खत्म हुई, तो जब फ्रैंको पूरे स्पेन के लीडर बने, तब उन्होंने बहुत सारे रैपिड चेंजेस लाए इन द फुटबॉलिंग सिस्टम, विच वर डन टू फेवर, आई वुड से, द capital club, which is Madrid. And he also identified with Real Madrid being as his, I would say, his identity of being the greatest club, which was also oversaw by Santiago Bernabeu. तो 1940 से ये राइवलरी एक्चुअली स्टार्टिंग हुई हीट अप के लिए, लेकिन तब तक उतनी हीटिंग अप राइवलरी थी नहीं दोनों क्लब्स में। एक्चुअल हीटिंग थोड़ी सी शुरू हुई जब मैड्रिड ने अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो साइन किया, एंड बार्सिलोना वर फोर्स्ड gave up on possibly the greatest player in La Liga history at that time. Alfredo Di Stefano Barca को छोड़ना पड़ा because there was pressure from La Liga, and there was even pressure from his parental club as well, that they had to leave out Alfredo Di Stefano. Barcelona, however, would get two of the possibly the greatest players in the 50s and 60s, Luis Suarez, who has recently passed away, and Laszlo Kubala, two of the greatest players in Barcelona's history. They're still etched in their name. तो थोड़ी सी राइवलरी हीटिंग अप शुरू हुई, क्योंकि अगर आप देखो कि अब प्लेइंग स्टाइल में तो हीटिंग अप शुरू हुई है दोनों की, दोनों के पास अच्छी टीम्स थी, बट आई थिंक द लेइंग फाउंडेशन व्हाई बार्सा बिकेम, I'd say, not bit sour, but trying to be like Madrid, was when Madrid won the first 5 Champions League in a row. Incredible achievement. उससे बासा फैंस को थोड़ी सी, I would say, they felt a bit jealous because the instrumental factor in all of those wins was Alfredo Di Stefano. तो उसके बाद से थोड़ी सी rivalry heating up शुरू हुई, and also the fact that they hated Franco because he suppressed their language. The speaking of Catalan was banned. You couldn't basically, go around and speak Catalan wherever you like. So the only place for for the people
living in Barcelona to speak Catalan was in the stadium. They used to sing in Catalan, they used to cheer in Catalan, and every time Franco was there, we used to make sure that he feels the fact that they are disagreeing with his decision to clamp on Catalan language. तो इतने साल तक कम रहा, कभी इतनी राइवलरी बढ़ी नहीं. इवन फुटबॉलिंग स्टेज पे थोड़ी सी राइवलरी बढ़ी जब जोहान क्राइफ आए एज द प्लेयर, एंड उन्होंने भी काफी कुछ सिंबलाइज किया, स्पेशली विद रेफरेंस टू बार्सिलोना एंड इट्स सिंबल्स, एंड देन लेटर ऑन एज अ मैनेजर जब वो ड्रीम टीम के मैनेजर बने. तो यहाँ तक एक प्लेइंग rivalry. There was hatred, of course, from both sides because, if you go to Madrid and you're Barca fan, they would chant "Puta Catalunya," and if you come to Catalonia, they would chant "Puta España." So the games were a bit political gimmicks. Like एक side अपनी loyalty दिखा देती to the Spanish crown, एक side loyalty दिखा देती अपने Catalan के aspect में. तो दोनों sides में rivalry तो थी, लेकिन possibly in my time the time I started watching and studying FC Barcelona and Madrid's rivalry, the turning point has to be none other than Luis Figo's transfer, which is possibly one of the most controversial transfers to ever happen in the history of football. तो दोनों साइड्स ने जब लुइस फिगो के डील की, सब जानते हैं कि जब लुइस फिगो वापस आए कैंप नो में, he got a hell welcome. But it didn't really matter that much because in that season Barca were very much struggling. They were not able to keep up the pace with Real Madrid. Real Madrid won the Champions League, although Barcelona did win the La Liga. But for Real Madrid, they won the ninth Champions League, and Barcelona were way behind Real Madrid because they only had won one Champions League. The other, I would not say the turning point, but an act of applaud. I won't still say it was an act of applaud by Madrid fans, but the fact that Ronaldinho destroyed them in the 2004-5 Clasico, wherein he scored a brace, the fact that Madrid fans stood up and applauded him is still said to be a fact that they didn't applaud Ronaldinho. It was done to basically tell to the Madrid players that, we are clapping for you for your horrible performance. It's what exactly many Madrid pundits and Madrid fans say. कि वो क्लैप रोनाल्डिनो के लिए नहीं था, वो हमारी टीम के लिए था कि उन्होंने इतना गंदा खेला. तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से थोड़ी राइवलरी बननी शुरू हुई फिर से. एंड विद द अराइवल ऑफ ऑब्वियसली लियोनेल मेसी फ्रॉम ला मासिया, उनकी पहली हैट्रिक थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड एट कैंप नो, अ गेम व्हिच एंडेड इन 3-3 ड्रॉ, in which Raul obviously complimented the young man for his game. And I think the other dimension of the rivalry being turned was obviously the arrival of Jose Mourinho, because by that time Barcelona was much more dominant. 2 साल से मैड्रिड ने ज्यादा सक्सेस नहीं देखा था, नीदर इन कोपा डेल रे, नीदर इन ला लीगा. काफी स्ट्रगल कर रही थी टीम, एंड चैंपियंस लीग में भी इतने नहीं थे. Mourinho arrived and he knew कि एक ही तरीका है जिससे मैं बारसा को हरा सकता हूँ. It's not in the match maybe, but maybe it's off the pitch, like giving some really nasty press conferences, asking the players to make tackles on them, making some outrageous statements and all. तो जोसे मोरिनियो ने ऐसा काम करना शुरू किया, लेकिन ये काम उन्होंने क्यों शुरू किया, इसका एक बेसिक रीजन था. जोसे मोरिनियो ने ये देखा कि जब उन्हें 2008 में जॉब मिलने वाली थी एज अ कोच ऑफ एफसी बार्सिलोना, वो तब इंटर मिलान के कोच थे आई गेस, तो सब तैयार था. जोसे मोरिनियो वाज रेडी टू बी अनवेल्ड, बट एन इम्पोर्टेंट पर्सन interrupted and said कि your coach is at Barca, his name is Pep Guardiola. That important person was obviously Johan Cruyff. And ये चीज मोरिनियो ने दिल पे ले ली. 2009-10 सीजन में जब he basically when Inter Milan qualified for the finals at Bernabeu, he went out and celebrated widely on the pitch. He made sure that the Barca president knew what he had actually done. There was no love lost. तो ये थोड़ी सी बैक स्टोरी थी. कमिंग बैक टू द पिच, द 5-0 फेमस क्लासिको जहां पीके ने 5 फिंगर्स दिखाए थे, वो मैच was one of the most physically combated match जहाँ पे Madrid fans बहुत टैकल कर रहे थे and most of the tackles were on Messi. That team had one objective, kill Messi. And उस मैच में Barcelona outscored Madrid, they outshone Madrid, and it was possibly one of the most dominating performances. तो वो मैच मोरिनो का पहला सीजन में it was very hard for him, although he did bounce back by winning the Copa del Rey in a
at the Mestalla against Barcelona with Ronaldo netting the header. And थोड़े दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोसो गार्डियोला ने बोला था कि द गेम वाज सो टाइट एंड द मार्जिन्स वर सो फाइन कि जो पेड्रो का गोल रूल्ड आउट हुआ था इट कुड हैव बीन आउटसाइड और नॉट. उस पे मोरिनो ने थोड़ा सा उनको छेड़ा कि हम एक न्यू एरा में आ रहे हैं जहां पे सिर्फ एक बंदा है कमेटी का इंचार्ज है जिसका नाम है पेप गार्डियोला. उसके बाद सबसे बिगेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला के माइंड में कि जब वो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बोला कि जोसे ने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मैं भी उनको जोसे के नाम से बुलाऊंगा. ये कैमरा मुझे पता नहीं किसका है, शायद सभी मोरिनियो भाई के हैं. एंड इट ही एंडेड विद इन दिस रूम ही इज द फकिंग बॉस एल पुतो आमो. वो मैच में भी इट वाज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल मैचेस जहां बासा प्लेयर्स को बहुत टैकल्स मिल रहे थे. Pepe and Ramos in the midfield, they were all playing for a draw. Until and unless a brutal tackle by Pepe on Alves ended all hopes of a Madrid win at the Bernabeu, in which Messi scored that famous goal. However, Mourinho did again have his revenge at the Camp Nou in a very one of the most closely contested La Liga seasons, wherein he won the La Liga title at Camp Nou with Cristiano doing his famous Calma Calma celebrations. And Madrid even won 100 points in that season, which was Mourinho's first La Liga title in Spain, first and only, and Guardiola's last season at Barca. तो दोनों से टाइम्स में बहुत कंट्रोवर्शियली रहा है. इतना आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट हीटेड एटमॉस्फियर्स जिस वजह से देयर वर इवन टेंशंस इन स्पेन के नेशनल स्क्वाड में भी. देयर वर फाइटिंग्स, देयर वर आर्गुमेंट्स एज पीपल से, बट it didn't have that much of an impact as they say because they knew when to keep their club commitments aside and when to be together as a team. तो ये तो आप एल क्लासिको की अगर आप एक राइवलरी एज अ होल देखोगे, लेकिन पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से द मोस्ट controversial match was the 11-1 win for Madrid, a match which was set to be having more significance for Barcelona fans because obviously Barcelona fans thought that this was one of the most politically charged matches because back in those days agar aap state team ke against jeette the you wouldn't go home safely. So it was said to be one of the most politically charged matches, which is definitely remembered by both sides but has more prominence in our history. And अगर आप अभी के एल क्लासिको में देखें, so the last El Clasico in La Liga at Camp Nou was possibly one of the most closest El Clasicos I've ever seen, with Frank Kessie netting the final goal. It was a match wherein there were tempers flaring on at the game, after the game, and there were quite few of alterations between Gavi and Ceballos, Lewandowski and Carvajal, which would have excited a lot of Barca and Madrid fans. But it was definitely good to see some Clasico coming back, some good old Clasico. So with this, I like to end the video. Thanks for watching, and do let me know your views in the comment section and which rivalry I should cover up next. Thank you.